Hello everyone, my name is Shaurya. So today I am discussing with you the important formulas of mathematics. Class 10th NCERT based. Only we can take chapter number you can note down chapter 1, 2, 3, 4, 5 and 7. 6 is skipped. Okay, 6 is skipped. Only we can know 1, 2, 3, 4 and 5 and 7. Mainly we can start the formula of this chapter like real numbers, polynomials and many more. Pair of linear equation, into variables, arithmetic progression, coordinate geometry and many more. So let's start. First, real numbers. We can learn real numbers yesterday of the exercise and day after yesterday. Introduction of real numbers. So let's come with the formulas. So let's start. First, HCF. Real numbers. Formula HCF and LCM. HCF and LCM relation we can know HCF in bracket A comma B equal to A multiply B. HCF and LCM relation HCF A comma B equal to A multiply B. Next. Sorry. HCF, this is the first formula, HCF and LCM relation. HCF in bracket A comma B. It can in shortly in multiply product form A multiply B. Next, equivalent division lemma. Equivalence. Division lemma. HCF and LCM relation and equivalent division lemma. So let's start. The formula of equivalent division lemma is equal to A is equal to BQ plus R, where 0 less than R, 0 less than R, less than and greater than equal to, and comma less than B also. A is equal to BQ plus R and where 0 less than R and less than B also. Okay. This is the two formula basically in the real numbers. HCF and LCM relation and is equal to HCF A comma B and A into B. Equivalent division lemma. A is equal to BQ plus R, where O less than R and less than B. Okay. Next, polynomials. First, in the polynomials we can say, firstly we can know the formula, main formula in this chapter. वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले हम देखेंगे. पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन जनरल फॉर्म, शॉर्ट में लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ब्रैकेट जनरल फॉर्म. अब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे. पॉलिनोमियल
and quadratic polynomial general form like this. Px in bracket is equal to ax square plus bx plus c equal to 0 in bracket. Note it down. A naught is equal to 0. Okay. General form px is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 and a naught is equal to 0. Next, in the quadratic polynomial general form. Next, sum of zeros. So now we can find the sum of zeros is equal to, the sum of zeros are alpha plus beta is equal to minus b upon a. The sum of zeros is equal to alpha plus beta minus b upon a. Coefficient of x upon coefficient of x square. Sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b upon a and coefficient of x and x square. Next, we can find the product of zeros. So now we can find the general form px is equal to x square plus bx plus c is equal to 0 and a naught is equal to 0, and sum of the zeros is alpha plus beta minus b upon a is equal to coefficient of x and coefficient of x square. In this product, alpha beta is equal to c upon a in bracket constant term upon coefficient of x square. You can know the, इसमें हमसे पूछा गया था कि coefficient of x, इसमें sum of the zeros का polynomial में बताना है coefficient of x and product of zeros में बताना है alpha कौन सी अपॉन है और इसमें बताना है माइनस बी अपॉन है. ये ध्यान रखना, सी अपॉन है इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द सम ऑफ द जीरोस आर माइनस बी अपॉन ए. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. It's clear? Okay. Next is pair of linear equation in two variables. Firstly, जैसे हमने इसमें कहा था, सबसे पहले जनरल फॉर्म निकाली थी, ऐसे हम सबसे पहले इसमें जनरल फॉर्म नोट डाउन. जनरल फॉर्म in pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables. General form. Note it down. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a1x plus b1y is equal to 0. And that's it. a2x plus b2y. This is a weight. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, this is the general
a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2 plus b2y plus c2 is equal to 0. Next, intersecting line. Intersecting lines. हम इंटरसेक्टिंग लाइंस को दूसरे ही बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ये बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन को हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon b2, मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए दिस इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट, जनरल फॉर्म हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड नेक्स्ट इज अ कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, इसको हम कोइंसिडेंट लाइन के अलावा हम इसको बोल सकते हैं इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके इनफिनिटली मतलब कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं ओनली इन कोइंसिडेंट लाइन। सो टेक द फॉर्मूला a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। इसमें infinite many solution, so a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2, that's why this is a coincident line and infinite many solutions. This is okay. Next, move further. And the last is 3 are in general form intersecting and coincident, and last is parallel line. Parallel lines, parallel lines को हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल, सॉरी नॉट एग्जांपल, we can take the formula a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 and not is equal to c1 upon c2, मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल होगा, लेकिन b1 upon b2 c1 upon c2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके नो सॉल्यूशंस हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब a1 upon a2 इसके इक्वल होगा, a1 upon a2 इसके इक्वल होगा and not equal to c1 upon c2. It's a parallel and no solutions are there. First general form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and इसके अलावा a2x plus b2y plus c1 is equal to 0. And intersecting line यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. Okay, and coincident line infinitely many solution a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, and parallel lines मतलब equal, parallel मतलब एक दूसरे के ऐसे, मतलब एक लाइन पे आपको पता नहीं चलेगी कितनी लाइंस है। parallel lines infinitely many solutions, parallel lines से ये हो गया, infinitely many मतलब एक लाइन पे दूसरी लाइन, इसमें जितने भी डॉट आ रहे हैं, अब इसमें ये जो इनफिनाइट है इसलिए दिस इज इनफिनाइट सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ पे एक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ ट्रूथ। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे इसके फॉर्म। फर्स्ट वी कैन डिस्कस द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट standard formula. Standard formula is, we can note it down. In quadratic equation, the standard formula is ax square
plus bx plus c is equal to 0 in bracket a not equal to 0. पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे फुल. नेक्स्ट, सेकंड, फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला, it's ax square plus bx plus c is equal to 0 and a not equal to 0. And second, discriminant discriminant formula. So discriminant formula is, we can note it down here, the discriminant formula is d is equal to b square minus 4ac. d is equal to b square minus 4ac. Second, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया. अब लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक formula. So the quadratic formula in the quadratic equation is minus x is equal to minus b plus root d upon 2a. ओके, इज इक्वल टू, हम इसको इसमें लिखते हैं ब्रीफली में एंड शॉर्टली, माइनस b, इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, फॉर्मूला डन हो गया. इसको एक्सप्लेन करें. Yes, standard formula ax square plus bx plus c is equal to 0 and a not equal to 0. Okay, and discriminant formula d denoted as discriminant and d is equal to b square minus 4ac. And in the last quadratic formula is minus x is equal to minus b plus root d upon 2a, and in the briefly solve this, minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. This is a quadratic equation format. Quadratic equation में दो चीज थी, एक तो quadratic equation and next is the nature of the roots. अब हम करेंगे the nature of the root. So first nature of the root is real distance, D-I-S-T-I and C-T, real distant root, comma, root if first, and second, real equal roots if, and last, no roots if. अब इसके हम फॉर्मूला लेते हैं. जब हमारा रियल डिस्टेंस एंड रूट इफ, तो d ग्रेटर देन 0. अगर रूट है हमारे जो रियल है, जो हमारे रूट है वो रियल है, तो वो d ग्रेटर देन 0 होगा. और जो हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो d इक्वल टू 0. एंड नो रूट्स, अगर कोई भी रूट्स नहीं है, तो इफ d ग्रेटर देन 0. दिस इज द नेचर ऑफ रूट. दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स, real discrete roots, d not equal to 0, and real equal roots if d equal to 0 and d greater than 0, and no roots if d smaller than 0. Okay, next is
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एपी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So firstly in the AP, firstly nth term, nth टर्म इससे करते सबसे पहले हमको nth टर्म निकालनी है, उसके बाद सम टर्म ब्रैकेट Sn इज इक्वल टू हमको nth टर्म निकालनी है और सम टर्म Sn एंड द लास्ट इज अल्टरनेट सम, अल्टरनेटिव सम. ओके, हमको इसलिए निकालना है nth टर्म, सम टर्म्स Sn and alternative terms formula. Okay. First, the nth term formula. An in bracket n plus 1 d. Nth term formula is An in bracket n plus 1 d. N minus 1, An in bracket n minus 1 d. सम टर्म Sn, इसमें सम टर्म ऐसे निकालना है, तो Sn is equal to n upon 2 in bracket, Sn is equal to n upon 2 in bracket में लेंगे 2a plus in bracket n minus 1 upon d. इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली Sn का फॉर्मूला है n upon 2 ऐड करना है, फिर 2a plus n minus 1 upon d, मतलब यहाँ पे n minus 1 upon d सेम लिख देंगे. अल्टरनेट सम फॉर्मूला सेम, Sn is equal to n upon 2 सेम वही इन ब्रैकेट a plus 1, इसमें a plus 1 हो जाएगा a plus l not 1, where L just a plus 1, a plus L, where L is the last term, where note it down. In this alternative sum formula, the Sn is equal to n upon 2 a plus 1, a plus l, where l is the last term. Okay, the last is coordinate geometry. First in coordinate geometry is distance formula, and second is section formula. These are two formula, and one more, it's midpoint formula, section formula and midpoint formula. So let's start. Firstly, section formula. In section formula, x square minus x1 in bracket whole square, comma y square minus y1 का whole square. Section formula इसका थोड़ा दूर इसके साथ distance formula. Okay, this distance formula is root x square minus x1 का whole square, then y square in bracket y square minus y1 का whole square. Distance formula is x square minus x1 का whole square and y square minus y1 का whole square.
And second is section formula. It's a very easy formula in this chapter. Section formula. Section formula is section formula. The section formula is the section formula is, we can note it down, the section formula. The section formula is the very easy formula in this chapter, coordinate geometry. Root m1x plus m2x upon m1x plus m2x plus, just a minute, m1x root m1 x square plus m2 x1 upon m1 multiply m2. ओके, अब ऐसे हमें रूट में इसका भी लिख लेना है. एक्चुअली रूट में नहीं लिख रहे हैं, सॉरी बाय मिस्टेक. इसको हम इन ब्रैकेट में लिखते हैं कॉमन. अब इसमें m1 x2 है, अब इसमें लिखना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 मल्टीप्लाई m2. ओके, m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1, yes, and upon m1 into m2, and second is m1 y2 plus m2 y1 and m1 into m2. Next, the last formula of this video is midpoint formula. The midpoint formula is x1 plus x2, this x1 plus x2, comma x1 plus x2, comma 2, and y1 plus y2 upon 2x plus 1. Sorry, only 2x. Okay, y1. So let's discuss. Okay, distance formula, x2 minus x1 का whole square and y2 minus y2 का whole square, and section formula is this is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 into m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 into m2. And the last formula is midpoint formula is this, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. This is the three formula in the coordinate geometry. Thank you.